Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. Today we are going to figure out which are the most important topics from January 2026 up until July 2026 for CLAT 2027 aspirants. Obviously, in all probability, after, in the next few months, बहुत सारे और new चीजें आ सकती है, शायद जो कि बहुत ज़्यादा important हो जाए, काफ़ी ज़्यादा उसमें media coverage हो जाए, and it is akin to the pattern that, CLAT has been asking. And of course, it will then become a part of our most important topics. Guys, instead of looking at, each particular topic, what we are going to today focus on are the important themes which have been repetitively asked in the common law admission test. So keeping that in mind, let's start off with the very first one. Theme number one, which is absolutely very, very important, something that we see in almost every CLAT examination is geopolitics, or for that matter, of course, international relations, right? Now, ये particular theme जो है, because the video is all about CLAT GK and current affairs, I'm not going to get into other sections, but I cannot stop myself, so I'm just going to make one statement, is that geopolitics is also exceptionally important for the other sections, right? वो English, logical, में भी आ सकता है. तो अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स एंड जीके की बात करें, लेट्स स्टिक टू दैट. We can divide international relations into many different parts. सबसे पहली बात तो international relations में लड़ाई हो सकती है, जैसे कि क्यूबा में ब्लॉकेट चल रहा है, या फिर for that matter if we talk about Iran, Israel, United States of America, or for that matter, Venezuela may, when Nicolas Maduro and his wife have been picked up by Donald Trump, of course, the president of the United States of America, and so hence that becomes important. The other type of subtopic under geopolitics and international relation will be multilateral grouping. Super duper important, especially important when the presidency is with India. For this particular year, of course, BRICS is a very important topic. So is Quad, but Quad के ऊपर इतना ज़्यादा मेरे को अभी लग नहीं रहा है, because the head of the state summit anyway they are not going to do, but never say never, we should definitely do it nonetheless. There's also the Indian Ocean Rim Association, जिसकी chairmanship is with India from 2025 to 2027. I think CLAT 2028 aspirants के लिए थोड़ा ज़्यादा important होगा, क्योंकि head of the state summit of IORA is going to happen next year. But again, never say never, and we should definitely do it. Apart from that, OPEC and OPEC Plus is in news because of the fact that UAE opted out of it, or for that matter अभी Iraq भी बोल रहा है कि it wants to opt out of it, and something related to that, any kind of a current affair, you have to have some static anchors to it. So when OPEC is in news, you should know ideally about the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries also, right? Gulf Cooperation Council, for that matter, European Union or Arab League, I can go on and on, even BIMSTEC for that matter. But yes, some are more important than the others, and how do we understand that? वो हमें देखना पड़ेगा कि यार इंडिया का क्या रोल है. अगर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, the importance is obviously a little more, right? Like I said, जो भी current में होता है उसका static becomes important. So every time a conflict is in news, you have to look at the fact कि पहले कभी ये conflict तो नहीं हुआ, conflict से पहले कैसा relation था, who were the people who were associated with that particular news. And so hence, just an example for you कि जैसे Iran, Israel, United States of America की बात होती है, तो Article 51 of the UN Charter, and for that matter even Article 2 of the UN Charter becomes important, amongst many other things. Let's move on to the next theme. The next theme for us is something called economy and technology. Economy and technology is very important. For example, CLAT 2023, which is considered to be the toughest GK current affairs section, ended up asking questions from cryptocurrency, because obviously cryptocurrency was in news at that time. Some people had done some घपला पैसा ऐसा कमा लिया था, तो उनके ऊपर ही सवाल आ गया. And different economic scams and people who have done those scams, उनके ऊपर सवाल. For that matter, during the COVID-19 pandemic, CLAT 2020 maybe it was related to economy, because that's what the government was doing at that time. So is the government doing anything extraordinary in economy? Guys, we can relate this to international relations only, because in Iran, Israel, United States of America का conflict हुआ, तो obviously economy के ऊपर impact पड़ा. So hence we are reading terms such as balance of payment crisis, or for that matter inflation. अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एक नया टाइप का इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का तरीका शुरू हो चुका है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि इंडिया में हुआ था फरवरी 2026 में. काफी अच्छी चीजें एंड काफी थोड़ी ह्यूमिलिएटिंग चीजें भी हुई थी,
ह्यूमिलिएटिंग भी बड़े थोड़ा नेगेटिव टर्म हो गया, हम एम्बैरेसिंग जरूर बोल सकते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ के अगर हम बात करें, because of again the same crisis and the blockade of the Strait of Hormuz and everything, what has happened is we've realized that we can't be dependent on other countries. So we want to be self-reliant, and for us to be self-reliant, for us to produce nuclear energy for the transmission and generation of electricity, for moving our submarines and for plenty of other things, we want to use our own thorium reserves that we have. So towards that we are doing a lot of things. Amongst them, एक न्यू एक्ट आई है कॉल्ड द शांति एक्ट. फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, और कोई एक लैंडमार्क न्यूक्लियर शिफ्ट अगर आया है तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट बिकम इंपॉर्टेंट. सो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, joint comprehensive plan of action, so on and so forth. Theme number 3 is Indian polity. Indian polity is basically the structure of the government, or how does our government actually function. एक लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो और संविधान की बात ना हो तो फिर तो ऐसा क्या बेकारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है वो. सो एनी काइंड ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम यू पिकअप, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. उनके भी अगर हम सब टॉपिक्स बना दे तो एक हो जाता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, many different bodies that are in use, the post of a speaker, right? Then comes constitutional flashpoint, something which is extraordinary, जो कि डिबेट होता है या फिर किसी के ऊपर लॉ बनता है. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कितने डिफरेंट स्टेट्स नाउ देव स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन लॉज, फ्रॉम गुजरात टू असम ट्राइंग टू पुट आउट अ बिल. For that matter, even West Bengal has said the same thing. Sonam Wangchuk has been in news, and for many, many different reasons. He was considered to be a threat to national security, with the government said that he's not right now, thankfully. Then, of course, since he's from Ladakh, and then there is an entire protest in Ladakh that they want to be a part of the 6th schedule. So that particular point becomes important. So Sonam Wangchuk, Ladakh, 6th schedule. 6th schedules is related Article 244, 371, Autonomous District Council. All of these become very, very important. Moving ahead, when we talk about, of course, also the Manipur crisis. Now, some of you will say Manipur crisis तो 2023 से शुरू हो रहा है, अभी जाके क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नया चीफ मिनिस्टर, 2 न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हुए हैं इन दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड द स्टेट इमरजेंसी वाज आल्सो टेकन अवे. जस्ट इट वाज शाय ऑफ 1 ईयर, बिकॉज 1 ईयर का कॉन्सेप्ट वो स्टेट इमरजेंसी वाला हमने किया है, और अगर नहीं किया है आपने तो डेफिनेटली कर लीजिए. Very, very important. And then, of course, census as an activity that is started. Moving ahead, let's move on to the next theme. Theme number 4 is environment, history, geography, anchors. Now, I'm putting a little bit of static GK also. When we talk about climate conventions, the last time this was asked was CLAT 2022. So UNFCCC, United Nations Convention to Combat Desertification, United Nations Convention for Biological Diversity, for that matter, even the International Big Cat Alliance, but I don't really think that is important, क्योंकि International Big Cat Alliance का summit हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया ना, बिकॉज ऑफ द इबोला वायरस एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये वैसे भी ये एज ओल्ड टॉपिक्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पे नहीं आते तो लीगल रीजनिंग में आ जाते हैं, वहां पे नहीं आते तो इंग्लिश या सीआर में आपको देखने को मिलते हैं. एक बार UNFCCC आई थिंक इंग्लिश के सेक्शन में आया था वेरी रिसेंटली, 2-3 साल पहले. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, जो भी करंट में होता है उसका स्टैटिक बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी इज सेट टू एंड इन 2026. गंगा रिवर बिकम्स इंपॉर्टेंट, उसका पूरा फ्लो बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लैट, कीपिंग इन माइंड and being very very clear about the fact कि CLAT 2026 में नहीं आया, पर CLAT 2025, CLAT 2024, CLAT 2023 इन सब में आया है, राइट? CLAT 2023 में भी आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री वाज नॉट देयर, but yeah, a little bit, because new parliament building and all they were making, so they ended up asking कि जब when the capital was Calcutta, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होता था, जिस स्ट्रक्चर में बिल्डिंग में बैठता था, उस बिल्डिंग का नाम बताओ. Are you getting it? So such kind of questions, they related to current affairs only, but they ask the entire passage on modern history. CLAT 2024 में Jallianwala Bagh massacre had come. CLAT 2025 में civil disobedience movement had come. So yes, when we say modern history, we basically talk about Regulating Act of 1773 से लेके when we got our independence. Not just 1940, of course, why
वाई जस्ट टिल 1940, इंडिपेंडेंस तक आपको कर लेना चाहिए. थीम 5 फॉर क्लैट स्पोर्ट्स इज सुपर इंपॉर्टेंट, एंड फॉर द वंस हु फील हम छोड़ सकते हैं स्पोर्ट्स, कभी कभार 2 पैसेजेस भी आ सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट 2023. ऑफ कोर्स द पैसेजेस, one passage was on FIFA and the other one was on chess, right? Last year also chess was asked. अब इस साल of course you know, अब इसमें भी हम सब headings बना देते हैं. So it is, CLAT won't simply ask you who won the match. They can also ask you who conducted this particular tournament and you know कहाँ पे है उसका headquarter, उसका head कहाँ पे है. So things such as ICC for cricket, FIFA for football, FIDE for chess, BWF for badminton, राइट. मेजर टूर्नामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पता होना चाहिए. क्रिकेट में तो यू नो इंडिया इज डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब. फॉर दैट मैटर फीफा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट, बिकॉज उसका काफी मीडिया अटेंशन है. ओलंपिक्स में भी हमारे कोई इतना भी ज्यादा मेडल टैली नहीं था, लेकिन एन इंटायर पैसेज वाज आस्क्ड इन क्लैट 2025, right? Okay, so yeah, and so history of the trophies they can also ask you. So last time when they asked you know, a passage on FIFA, they ended up asking the name of the oldest football tournament of our country, of India. So something or the other you know related to India वो पूछ सकते हैं. With that, we are done with the kind of themes that are over and over again repetitively asked in the common law admission test. Now, what you need to do is go back to your notes, identify the topics under these themes, then identify the most important out of them, and then I've told you what to do. हर एक टॉपिक के लिए एक पेज रखिए. जो मॉक से आपने लर्न किया वो भी लिखिए, जो क्लास नोट में लर्न किया वो भी लिखो, जो आपने यूट्यूब से लर्न किया वो भी लिखो. माने कहीं से भी लर्न किया, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर लर्न किया है, इट शुड बी देयर ऑन दैट पर्टिकुलर पेज. एंड विद दैट आई एम डन फॉर टुडेज टॉपिक. आई विल सी यू गाइज अगेन सून. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.